Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jam Vishnupad Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtatrashta Shri Srimad Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Nama Acharya Shri Haridas Thakur ki Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivas Adi Gaur Bhakta Vrinda ki Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Radha Kund Shyama Kund Girikavardhan ki Vrindavan Dham ki Mayapur Dham ki Ganga Mai ki Yamuna Mai ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai Nitai Gaur Premanande Hare Krishna. So you will translate or? He means who? Okay. So, and we will be reading and discussing from a book named Shri Harinama Cintamani. This book was written by Bhaktivinoda Thakur. And basically what it is, there are all the teachings of Haridas Thakur put together. And they are presented in this book in the form of a dialogue between Haridas Thakur
and Chaitanya Mahaprabhu. और ये कक्षाएं जो है श्री चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच में वार्तालाप के माध्यम से बताई गई है. And the topic of this book is the chanting of the holy name. और इस पुस्तक का जो विषय है वो है भगवान का पवित्र नाम. And specifically, it deals with the Namaparats. और विशेष रूप से ये नाम अपराध से बारे में उल्लेख करते हैं. Then it goes through all the Namaparats and it discusses on actually what it is and how to avoid it and the remedies for when committed. तो इसमें नाम अपराध का वर्णन आता है, विज्ञान है और उससे कैसे बचना है और नाम अपराध होने के बाद क्या उपाय है उसका निवारण करने का. So then we are here basically for, we were here for 4 days, right? चार दिन तक इसके Yeah. ऊपर चर्चा करेंगे. So let's see how far we get. तो देखते हैं कि कहाँ तक हो पाता है. Then what we do, the best thing I think is we will read from the book, and when there are some points need to be discussed, then we will stop and discuss it. तो सबसे उत्तम विधि यही होगी कि हम पुस्तक से पढ़ते जाएंगे और उस विषय वस्तु ऐसी आएगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे. And when there is some question or something not clear, then you should ask. तो जब भी कोई किसी को प्रश्न हो और कुछ स्पष्ट नहीं हो तो बीच में पूछ सकते हैं. Okay? Hare Krishna. Is it better? Or put it more loud. Hare Krishna. So then we will read because of the shortage of time, then we will move a little bit forward. There is the introduction. In the introduction, then there is a description of when Haridas Thakur, where he was born and his activities, like in Chaitanya Charitamrita. तो पुस्तक के परिचय में जो हरिदास ठाकुर की जीवनी बताई गई है चैतन्य चरितामृत से, उनके जीवन के बारे में, उनके जन्म स्थान इत्यादि विषय में. And we will move to the chapter 2, and from there we will start reading. तो द्वितीय अध्याय से पाठ प्रारंभ करेंगे. And the chapter is entitled the Namagrahana Vichar. Namagrahana Vichar, or is a chanting of the holy name. द्वितीय अध्याय का शीर्षक है नाम ग्रहण विचार. So every chapter starts with a little Mangalacharan. Anyway, so we will read. हर अध्याय में मंगलाचरण से आरंभ होता है. हम उसे पढ़ते हैं. Glory to Lord Chaitanya, to Lord Gadadhar, and to Lord Nityananda, the life of Jahnava-devi. Glory to Advaita, the husband of Sita. Glory to Srivas and all other devotees of the Lord. Haridas wept with great love. With love, Lord Chaitanya embraced him. I don't know how I'm going to translate this. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, उनके पार्षदों की जय हो. हरिदास ठाकुर जो है प्रेमाश्रु उनकी आंखों से प्रवाहित हो रहे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया. It's very poetic language. So
ये कविता में ही रचना है, इसलिए ट्रांसलेट करना थोड़ा कठिन होगा। Lord Chaitanya said, there is another devotee like you. You know all the truths of spiritual life. You are always beyond the touch of Maya. That's what he is telling to Haridas Thakur. चेतन महाप्रभु हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं कि आपके जैसा भक्त कहाँ होगा, आप हमेशा माया के स्पर्श से दूर हैं। Descending to this world, you took birth in a lowly family. In this way, you showed everyone that it is not by wealth, honor, noble family, or material virtues that one is able to meet Lord Krishna. जब आप इस धरती पर अवतरण हुआ था तो आपने निम्न कुल में जन्म लिया, यह दिखाने के लिए कि जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता और ये सब से भगवान प्राप्ति नहीं होती। Anyone who has great faith in pure devotional service is a saint. He is more exalted than the demigods. किसी भी व्यक्ति को यदि शुद्ध भक्ति में श्रद्धा है, विश्वास है, तो वह देवताओं से भी बढ़ता है, वो साधु है। So this point is a lot described in all the books, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. तो यह जो बिंदु है सारे पुस्तकों में, चैतन्य चरितामृत, भागवत में भी स्पष्ट रूप से समझाई गई है। The demigods, they are suras. They are sort of devotees, but their problem is their addiction to sense gratification. यह विषय उसको बताई गई कि किस प्रकार देवता हैं, सुर है, लेकिन वे भी भक्त हैं, लेकिन उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं भी रहती हैं। A devotee, then who is engaged in pure devotional service, therefore is more exalted than the demigods. लेकिन जो भक्त है, क्योंकि वह शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, इसलिए वह देवताओं से भी उच्च स्थान पर है। Because for such a devotee, even the sense gratification in the heavenly planets, it's not a consideration. क्योंकि ऐसे भक्त के लिए स्वर्गीय इंद्रिय तृप्ति का सुख के लिए भी कोई विचार नहीं होता उसको। That's what makes the devotee more exalted. इसलिए वह देवताओं से भी उच्च पद पर है। You know the truth of the holy name, the best of all truths. You are an ideal example of saintly conduct. You are an expert preacher. चेतन महाप्रभु कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर को कि आप हरिनाम के विषय में सब जानते हैं और आप वास्तविकता में धर्म के अर्थ को जानते हैं। Speak, O Haridas, the limitless glories of the holy name. Hearing them from your mouth, I will feel bliss. हे हरिदास ठाकुर, कृपा करके भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कीजिए और उसे सुनकर मैं आनंद विभोर हो जाऊंगा। So now, then Haridas Thakur speaks. तो अभी हरिदास ठाकुर बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। Anyone who once say the holy name is a Vaishnava. A householder should carefully honor him. कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार भगवान के पवित्र नाम कहा है वो वैष्णव है और हर व्यक्ति को उसका आदर करना चाहिए। So, in Chaitanya Charitamrita, there are the questions of the devotees from Kuriyagram to Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन आता है कि किस प्रकार कुरियाग्राम के वासी जो है चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न करते हैं। So, who is a Vaishnava? वे लोग प्रश्न करते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि वैष्णव कौन है। So, a person who even once says the holy name, then he is considered a Vaishnava. कोई व्यक्ति जिसने एक बार में भगवान के नाम का उच्चारण किया है वह वैष्णव है। He may not be very exalted Vaishnava yet, but with his sincerity he will become. हो सकता है वो बहुत उच्च कोटि का वैष्णव नहीं हो, लेकिन वह अपनी गंभीरता से उच्च कोटि का बन सकता है। Therefore, such a devotee has to be respected as a Vaishnava. इसलिए ऐसे भक्त का भी वैष्णव के जैसे ही आदर किया जाना चाहिए। And that's very important at the time when you have guests coming and they may not be at all dressed or even sometimes behaving like Vaishnavas.
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हो सकता है मंदिर में बहुत सारे अतिथि हैं जो वैष्णव वेशभूषा में न हो और उसके वैष्णव के साथ व्यवहार भी न करें। But they are visiting the holy place, the temple. They hear and then they chant Hare Krishna. लेकिन क्योंकि वे पवित्र स्थान में आए, मंदिर में आए और भगवान का कीर्तन सुनते हैं और भगवान का नाम बोलते हैं। So we should be very careful and respect those devotees. क्योंकि वे कृष्ण का नाम लिए हैं, इसलिए हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक उनका आदर करना चाहिए। Because they are devotees. क्योंकि वे भक्त ही हैं। So we should not think that only someone then who is dressed like and has a tilak, then only he is a devotee and everybody else just is nobody. तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जिसने तिलक धारण किया है और वैष्णव वेशभूषा में नहीं वैष्णव है, बाकी सब कोई भक्त नहीं है। So therefore the safest thing is to consider anybody who comes into the temple as a devotee and deal such a way so that we don't offend. तो सबसे सुरक्षित तो यही होगा कि कोई भी मंदिर में आता है तो उसे वैष्णव की तरह ही व्यवहार करें। And we will go more deeply into it when we speak about the Vaishnava Parad. इसके बारे में और गहनता से चर्चा करेंगे जब हम वैष्णव अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। So continue. Anyone from whose mouth one always hears the holy name of Lord Krishna is a more exalted Vaishnava. He is the abode of all good qualities. आगे कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि सतत हरिनाम कर रहा है तो वह और भी उच्च श्रेणी का वैष्णव है। So previously we were talking about the Kanishtadhikari. This is the Madhyamadhikari. तो पूर्व में हरिदास ठाकुर ने कनिष्ठ अधिकारी के बारे में कहा, अभी मध्यम अधिकारी के विषय में कह रहे हैं। Then continue. Simply by seeing him, one feels devotion to Lord Krishna and finds Lord Krishna's holy name in one's mouth. That is the most exalted Vaishnava. जिस वैष्णव को देखते से ही भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाए और भगवान का नाम उच्चारण हो जाए, वही सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। So such a devotee who, by others seeing him, they get inspired to chant, so then it's Uttamadhikari. तो ऐसा वैष्णव जिसे देख के भगवान के नाम का जप करने की प्रेरणा मिले, वह उत्तम अधिकारी है। How will the conditioned souls take up the chanting of Lord Krishna's holy name? What is the arrangement for that? Please tell that to me. श्री चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं कि जीवात्मा कैसे भगवान के नाम का जप करना आरंभ करेगा, इसके लिए क्या व्यवस्था है, इसके बारे में मुझे बताइए। So you see the concern of Haridas Thakur, no, Uttamadhikari. He is very concerned not for himself, but he is concerned for all the living entities. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हरिदास ठाकुर जो है दूसरे जीवात्माओं के बारे में चिंतित है, वो केवल अपने विषय में नहीं सोचते, दूसरे जीवात्माओं को उठाते हैं। He knows the truth of the holy name. He knows the glories of the holy name. So he is happily not discussing that with Chaitanya Mahaprabhu, but his attitude is mercy. He is very compassionate, very merciful to other living entities. हरिदास ठाकुर हरिनाम के तत्व के बारे में जानते हैं, उसकी शक्ति के बारे में जानते हैं और वह आनंदपूर्वक चैतन्य महाप्रभु से उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पे वे दया दिखा रहे हैं दूसरे जीवों के बारे में। ये उत्तम अधिकारी के लक्षण है। So now, then he will be discussing about what actually is the arrangement, or what is the proper way of chanting the holy name. तो अभी वे बताने वाले हैं कि भगवान का नाम सही रूप से किस प्रकार लिया जाए, इसके लिए क्या व्यवस्था है। And it is good to properly listen, to contemplate, because japa is the most important activity of our day. इसके विषय में सुनना और उसके ऊपर मनन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब हमारी आध्यात्मिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। So how to properly chant? How to avoid offenses so we can properly chant? Now, this is the topic.
That's what we will be discussing. तो सही रूप से भगवान का नाम किस प्रकार से जप किया जाए, कैसे अपराधों से बचा जाए, यही हमारा विषय है। Folding his hands, Haridas began to speak. Pushed by ecstatic love, his eyes were filled with tears and his voice was choked. हरिदास ठाकुर हाथ जोड़कर आंखों में प्रेमाश्रु और भगवत प्रेम में आवेश होने के बाद इस प्रकार बोलने लगे। Haridas said, Lord Krishna's holy name is spiritual. It has no beginning. It is a Cintamani jewel. Lord Krishna is holy name. Is his holy name. They are one. हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण और का नाम एक ही है। भगवान का नाम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और यह चिंतामणि है। So here, then he's discussing or beginning to discuss that the Lord's name and form are non-different. तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का रूप और भगवान का नाम उनमें कोई भेद नहीं है। The holy name is the form of transcendental mellows. It is always liberated. It is eternal and pure. It is non-different from Lord Krishna himself. भगवान का पवित्र नाम जो है सारे दिव्य रसों का स्रोत है, यह हमेशा नित्य है और हमेशा शुद्ध है। Its form is eternal and its nature is nectar for the rasikas who relish nectar. The holy name descends into this dull and lifeless material world. तो हरिनाम का जो रूप है वो रसमय है और रसिक भक्तों के लिए आनंद का स्रोत है और इस जड़ जगत में वह आता है। Lord Krishna is known in 4 ways: by his name, form, qualities and pastimes. These 4 have no beginning. तो भगवान श्री कृष्ण 4 रूप से जाने जाते हैं, उनके नाम, रूप, गुण और लीलाओं के रूप में, और ये चारों एक दूसरे से अभिन्न हैं। So Krishna is not different from all these, and therefore he is known by these. तो कृष्ण इन चारों से अभिन्न है और ये चारों से जाने जाते हैं। Now, to understand and to realize, well, it's just a different depth of realization. तो इसको समझना और अनुभव करना ये अलग-अलग स्तर की बात है। Lord Krishna exists eternally. He is nectar personified. He is free from material dualities. His 4 features, name, 4 qualities and pastimes are all perfect. तो भगवान श्री कृष्ण नित्य हैं और उनके नाम, रूप, गुण, लीला ये पूर्ण रूप से दिव्य हैं। These 4 features are manifest by his Sanini potency. These features are celebrated as being eternal, perfect and always spiritual. तो ये जो भगवान के 4 एस्पेक्ट हैं, ये भगवान की संधि शक्ति द्वारा अभिव्यक्त होते हैं और ये नित्य और पूर्ण हैं। Lord Krishna attracts everyone in all the worlds. The great treasure that is Lord Krishna's name also has the same quality eternally. तो भगवान श्री कृष्ण सभी को आकर्षित करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का नाम के अंदर भी यही गुण है, वो भी सबको आकर्षित करते हैं। So, Lord Krishna is all attractive. भगवान श्री कृष्ण सर्वाकर्षक है। The name and the Lord are non-different. भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। And therefore, the name is also all attractive. इसलिए नाम भी सर्वाकर्षक है। It has the same potency as Krishna because it's no different from Krishna.
तो भगवान के नाम में भगवान श्री कृष्ण की जैसे ही शक्ति है, क्योंकि वह उनसे अभिन्न है। No. And that has to be realized. That's what happened to Narada Muni. और इसको अनुभव करने की आवश्यकता है, और यही नारद मुनि के साथ हुआ। When he could not see the Lord again by meditation, then he instructed him, you chant the holy name, and as long as you are chanting, I am with you. जब नारद मुनि ने ध्यानावस्था में दूसरी बार भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, तब उन्हें यही शिक्षा प्राप्त हुई कि वे भगवान का नाम लें, और जब तक वे भगवान का नाम लेते हैं, वे उनके साथ ही हैं। That's why Narada Muni never stopped chanting, because he is always with Krishna. इसलिए नारद मुनि ने भगवान का नाम लेना कभी भी रोका नहीं, क्योंकि वे हमेशा कृष्ण के साथ ही हैं। So as long as we are chanting, then we are with Krishna. इसलिए जब तक हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हम भगवान के साथ हैं। Now, we may not have realized it yet, but by chanting, we will come to the realization. तो हो सकता है हमें इसकी अभी अनुभूति नहीं होती है, लेकिन हम जब करते रहेंगे तो अनुभूति भी होने लगेगी। Lord Krishna exists eternally. He is nectar personified. He is free from material dualities. Okay. Lord Krishna is never different from his form. His name and form are the same. They are non-different. तो भगवान कृष्ण अपने रूप से अभिन्न है, उनका नाम रूप अभिन्न है। Anyone who remembers Lord Krishna's name meets Lord Krishna's form. Lord Krishna's name and form are not different. They are Lord Krishna himself dancing in different dancing places. Dancing, yeah. तो भगवान का नाम जहाँ पर है, वहाँ पर भगवान का रूप भी है, क्योंकि ये दोनों अभिन्न है। तो जहाँ पे भगवान का नाम है, वहाँ भगवान का रूप भी नृत्य कर रहे हैं। So that's very important to understand our aim. What Srila Prabhupada is telling us, we should remember Krishna 24 hours a day. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें 24 घंटे भगवान का स्मरण करना है। And when we chant, then we are directly performing service to the Lord. और जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। Then when we don't chant, then we should be performing then devotional service. तो जब हम जप नहीं कर रहे होते हैं, तब हम किसी न किसी भक्तिमय सेवा में लगे रहना चाहिए। Right? Whatever other services we may have been doing. किसी भी प्रकार की सेवा हम कर सकते हैं। But we should do always something which will always make us remember Krishna. लेकिन हमें हर समय ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमें भगवान का स्मरण हो सके। And if we are engaged in activities which are not directly devotional service, then we should be very careful that we are not forgetting Krishna. तो यदि हम कोई ऐसा क्रियाकलाप कर रहे हैं जो सीधे कृष्ण भावना से संबंधित नहीं है, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि कम से कम भगवान का विस्मरण तो नहीं हो। Like Srila Prabhupada, when he first came to America, then he was asking the devotees to chant 64 rounds minimum a day. श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रथम बार पहुंचे, तो भक्तों पे 64 माला करने के लिए कहते थे रोजाना। Seeing that they were unable to, then Srila Prabhupada then went to 32 and 16. But besides then chanting, there must have been engagement in direct devotional service. जब 64 माला नहीं कर पा रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद ने 32 में 16 कहा, लेकिन उसके अलावा जो अतिरिक्त समय था, उसमें कुछ भक्ति में सेवा में लगाया हमने। Just that I chant 16 rounds, I finish 16 rounds, and I don't have to do anything.
that's not devotional service. तो केवल 16 माला कर भी बस हो गया और कुछ सेवाएं नहीं कर रहे हैं, यह भक्ति में सेवा नहीं है। So that's the always remembering Krishna. तो यह है कि हर समय भगवान का स्मरण होना चाहिए। Always engaged in direct service to the Lord. तो भगवान से सीधे सेवा में उसको लगे रहना चाहिए। Another question is that Krishna and his holy name is not different. Now when we go and we see Krishna, there is divine lotus feet of Krishna, there is face of Krishna, there is fruit of Krishna. So how this is similar to the holy name of Krishna? Because we say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Harinama, Ram Ram. Now where is the lotus feet? There is the lotus face, there is the fruit of Krishna, there is the hands of Krishna, the holy name. We say Hare Krishna, there is no difference between the form and the name of Krishna. प्रभु जी का प्रश्न है कि यदि भगवान का नाम और उनका रूप अभिन्न है, तो जब वो भगवान का रूप देखते हैं तो उनके चरण कमल, उनका मुखमंडल, उनकी बांसुरी सब अलग अलग देखते हैं, लेकिन भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र में ये कहाँ है भगवान के रूप और चरण कमल इत्यादि। See, when you are talking about the name and the form not being different. तो जब हम भगवान का नाम और उनका रूप अभिन्न है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, So we automatically try to compare it to a concept which we understand. तो हम स्वाभाविक रूप से उस धारणा से इसकी तुलना करते हैं जो हमारे मन में पहले से है, Which is material. जो कि पूर्ण रूप से भौतिक है। So your name and you are different. जैसे कि आपका नाम और आप भिन्न हैं, And therefore, Krishna's name and his form must be also different. और इसलिए इसी प्रकार कृष्ण और उनका नाम भी भिन्न होना चाहिए। Right? That's the natural, logical understanding. तो यह जो है स्वाभाविक रूप से व्यक्ति इस प्रकार से सोचेगा। Pratyaksha, right? By observation. Or anuman. Okay, no, you by comparison. Okay, yeah. सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से या फिर अनुमान से हम इसी प्रकार से विचार करेंगे। So that's what you assume, but it's based on the perception of your senses, the mind and intelligence. तो हमारे मन बुद्धि और इंद्रियों के जो चिंतन है इस हिसाब से हम इस प्रकार से विचार करेंगे। Since these are material, then it's not possible to understand anything beyond material. क्योंकि ये सारी वस्तुएं भौतिक हैं, इसलिए कोई वस्तु जो भौतिक परिप्रेक्ष्य से परे है उसके बारे में समझना कठिन हो जाता है। So if you keep trying to understand this through this approach, then you will not be able to. तो यदि हम इसी तरीके से इसको समझने का प्रयास करते रहेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। Like an example, okay? If you say a mango, then you immediately get the taste of the mango. You know what it is, right? उदाहरण यदि आप आम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत ही आपको आम के स्वाद के बारे में कोई विचार आता है। Then you go to someone who never had a mango. तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिसने कभी आम नहीं खाया, Then how do you explain to him how mango tastes like? तो आप उस व्यक्ति को कैसे समझाएंगे कि आम का स्वाद कैसा होता है? How will you do that? It's very difficult, no? ये बहुत कठिन होगा उसे समझाना कि आम का स्वाद क्या होता है। What will you compare it to? तो आप उसकी तुलना किससे करेंगे? Fruity, yeah?
रोटी से तुलना करेंगे। So, only when you taste, you get the realization. जब आस्वादन करेंगे तभी उसका अनुभूति प्राप्त होगी। When you realize, then you know. और जब अनुभूति प्राप्त होगी तब आपको जानकारी है। And no, hours or days or years of explanation will not be able to explain the same as if you taste it. यदि हम कई दिनों तक कई सालों तक भी समझाएंगे, फिर भी जब वो आस्वादन करेगा उसको तभी समझ में आएगा। Right? So, therefore, then the chanting of the holy name, when the chanter becomes eligible, इसलिए भगवान के जप में भी जप करने वाला व्यक्ति योग्य बन जाता है, then the understanding of that the name and the form of the Lord, they are one, comes as a realization. तो यह जो तत्व है कि भगवान और उनका नाम अभिन्न है, उसकी अनुभूति वो करता है योग्यता के होने पर। But until then we have to have the faith that by chanting of the holy name, I will come to realize that the name and the form are non-different. लेकिन जब तक हमें अनुभूति प्राप्त नहीं है, तब तक हमें दृढ़ विश्वास श्रद्धा के साथ भगवान का नाम कीर्तन करना है, ताकि हम उस स्तर पर एक दिन पहुंच पाएं। So we have no doubt, we believe that the taste or that the name and the form are non-different because Acharya says so. तो हमें इस बात पे कोई दुविधा नहीं है कि भगवान का नाम और का रूप अभिन्न है, क्योंकि आचार्य ऐसा कह रहे हैं। Same like, you know, a person may believe that mango tastes nice, but he doesn't know how. वो ऐसा ही है कि व्यक्ति कहता है कि आम बहुत अच्छा स्वाद में होता है, लेकिन उसको पता नहीं कि वास्तविकता में वो स्वाद क्या है। But because you are his friend and you told him, he believes you, but still he doesn't know how, but he believes, yes. तो आप उसे समझा सकते हैं कि आम अच्छी वस्तु है, तो आपके ऊपर विश्वास भी कर सकता है, लेकिन वास्तविकता में वो जानता नहीं है कि आम का स्वाद है। So, the holy name brings you to the realization when the process of Chetudarpana Marjana happens. तो भगवान का नाम जो है आपको उस अनुभूति तक लेके आएगा जब चेतोदर्पण मार्जन की विधि होगी। What is that? Today some kids were playing here. Marriage. Okay. Okay, you understand? Lord Krishna possesses 64 qualities. Qualities manifest in him in limitless fullness. In his various incarnations, these qualities are manifest only partially. तो भगवान कृष्ण के अंदर 64 गुण हैं और ये 64 गुण असीमित रूप से उनके अंदर है, लेकिन ये सीमित रूप से प्रकाशित होते हैं। Yeah, so Bhagavan, and he is full in opulence, quality, quantity. तो भगवान जो है ऐश्वर्य में पूर्ण है, गुणवत्ता और माप के अनुसार। And any of the incarnations or manifestations, and up to even the jivas, they all have some portions of the qualities and quantities of what Bhagavan has. भगवान श्री कृष्ण के ही गुण हैं, भगवान के अवतार और जीव भी कुछ मात्रा में उसका प्रकाश करते हैं। Brahma, Shiva and the other demigods possess only some of these qualities. Lord Narayan possesses 60 of them. ब्रह्मा और शिव जी जो
गुण जो है प्रकट करते हैं। All these qualities are eternally present in Lord Krishna's holy name. ये सारे Okay. यह सारे गुण जो है भगवान के नाम में नित्य रूप से विराजमान हैं। Limitless numbers of these qualities fill the spiritual world of Vaikuntha. और ये भगवान के अनंत नामों के जो गुण हैं वो आध्यात्मिक जगत को भर देते हैं। So again, Krishna is Bhagavan. He has 64 qualities, and his holy name has all these qualities as Krishna has. तो फिर से जैसे कि भगवान के अंदर 64 गुण हैं, वैसे ही कृष्ण के नाम के अंदर भी ये सारे 64 गुण पूर्णता में हैं। And who said that? Namacharya Shri Haridas Thakur. और यह कौन कह रहे हैं? नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। So he is realized, he is the Acharya of the holy name. He says so. Then what should we do? We should believe it. और ये कौन कह रहे हैं? हरिदास ठाकुर, और वो आचार्य हैं नाम के, इसलिए हम उन पर विश्वास करते हैं। We may not have realized it yet, but it is a fact. हो सकता है हमें इसकी कोई अनुभूति नहीं है, लेकिन ये तथ्य है। So, when we approach this without doubts in the mind, we will be able to properly realize it at the later stage. तो यदि हम पूर्ण रूप से बिना कुछ शक के इसको इस तरीके से ग्रहण करेंगे तो आगे चल के हम इसका अनुभूति भी कर पाएंगे। Present everywhere in the waves of these qualities are Lord Krishna's pastimes. These perfect spiritual pastimes are manifest in Goloka, Vaikuntha and Braj. गोलोक, वैकुंठ और ब्रज में भगवान के लीलाएं भी विराजमान हैं, उनके अंदर ये गुण प्रदर्शित होते हैं। Lord Krishna's name, form, qualities and pastimes are not different from each other. The conditioned souls, material names, form, qualities and pastimes are different from each other. भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला जो है अभिन्न है, लेकिन जो एक बद्ध जीवात्मा है उसका नाम, रूप, गुण, लीला ये भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। Lord Krishna never has even the slightest scent of anything material. Therefore, his name, form, qualities and pastimes are all one. भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला जो है उसमें अंश मात्र भी भौतिक वस्तु नहीं है, इसलिए वे पूर्ण रूप से अभिन्न है। Of these four, name, form, qualities and pastimes, ways you are known, your name is the first. This is accepted by all. आपके नाम, गुण, रूप, लीला में नाम जो है वो सबसे पहले है और ये सारे शास्त्र इस प्रकार से कहते हैं। By your name alone, the Vaishnava Dharma is manifest. आपके नाम से ही वैष्णव धर्म का प्रागट्य होता है। By your name, your form, qualities and pastimes are made visible. आपके नाम से ही आपका रूप, गुण और लीलाएं दृष्टिगत होती है। By your name, your Krishna pastimes are known. आपके नाम से ही अलग अलग लीलाएं जानी जाती हैं। By your name, the supreme truth about you is manifest. आपके नाम से ही आपके बारे में परम सत्य तत्वों के बारे में जानकारी होती है। So you see now how Haridas Thakur is stressing to the point that just by the name, by chanting of the name, everything becomes manifest. तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर इस बात पे बल दे रहे हैं कि कैसे भगवान के नाम से ही सब चीजें धीरे धीरे प्रकट होगी। And we as devotees, then we should not have doubt in this. और भक्त के रूप में हमें उसके ऊपर कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। Then we may very soon realize the same truth as Haridas Thakur is speaking about. हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जिस प्रकार हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, जल्दी हमें भी ऐसी अनुभूति प्राप्त होगी। But if we have doubts, then it may take very long time. लेकिन यदि हमें संशय है तो बहुत लंबा समय लगेगा। A conditioned soul may chant your name with faith. When he becomes purified, he is called a Vaishnava. तो एक बद्ध जीवात्मा आपका नाम श्रद्धा के साथ ले सकता है और जब वो शुद्ध हो जाता है तो वो वैष्णव कहलाता है। A person whose chanting of your name is Namabhas
is called a Vaishnava Praya. By Lord Krishna's mercy, he gradually becomes purified. जो व्यक्ति नामाभास के स्तर पर जप करता है वह वैष्णव प्राय कहलाता है और धीरे धीरे वह भी आपकी कृपा से पूर्ण शुद्ध हो जाएगा. We will hear also later on the glories of Namabhas, आगे चलकर हम नामाभास की क्या महिमा है उसके बारे में श्रवण करेंगे. and then what's the difference between Namaparat, Namabhas and the Shuddhanam. और नाम अपराध नामाभास और शुद्ध नाम में क्या भेद है ये भी हम श्रवण करेंगे. But anybody who chants, the Vaishnava Praya means the Kanishta Adhikari. वैष्णव प्राय का अर्थ होता है कनिष्ठ अधिकारी. And such a person, he continues chanting, he will get purified, he will be looking for association of devotees, and he will progress. ऐसा वैष्णव भी जब वो नाम कीर्तन करते रहेगा तो वो शुद्ध होगा और भक्तों का संग की आशा करेगा और पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा. Nothing is like the holy name in this world of birth and death. The holy name is the greatest treasure of Lord Krishna's treasure house. तो इस जन्म मृत्यु के संसार में भगवान के नाम की तुलना में और कोई उपहार नहीं है और भगवान के खजाने में से ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है. And you see, that's actually our fortune, because in other yugas there are various ways how you can serve the Lord. तो ये हमारा बहुत ही बड़ा भाग्य है क्योंकि अलग अलग युगों में बहुत सारे तरीके थे जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते थे. By meditation, ध्यान के द्वारा, by yajna, यज्ञ के द्वारा, by deity worship. अर्चना विग्रह की सेवा द्वारा. But at that time, then it's not revealed that just by simply chanting of the holy name, you can achieve all that. तो अन्य युगों में यह स्पष्ट नहीं था कि केवल भगवान के नाम से ही इन सब का फल मिल सकता है. So this truth now is revealed now in Kali Yuga when people cannot concentrate on all the other activities. तो यह सत्य जो है कलयुग में प्रकट है जब व्यक्ति जो है दूसरे क्रियाकलापों पर केंद्रित नहीं हो सकते, ध्यान नहीं कर सकते. So therefore, now Kali Yuga is also described now as that's the greatness of Kali Yuga. That just now Krishna, out of his mercy, as Lord Chaitanya, reveals that just by chanting of the holy name, you can achieve perfection. तो ये कलयुग की महानता कही गई है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेके कृपावश भगवान का नाम जो है वितरण कर रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ है. In this world of Lord Krishna's holy names are of two kinds, primary and secondary. भगवान कृष्ण के दो प्रकार के नाम हैं, मुख्य और गौण. By taking shelter of the primary names, the individual souls attain the greatest benefit. मुख्य नाम लेने से जीवात्मा जो है सर्वोत्कृष्ट लाभ प्राप्त करते हैं. The names that describe the Lord's transcendental pastimes are Lord Krishna's primary names. भगवान के वह नाम जो भगवान की लीलाओं के बारे में बताते हैं वह उनके मुख्य नाम हैं. They are the abode of all transcendental qualities. और वह सारे दिव्य गुणों के आधार हैं. And they are Govinda, Gopal, Sri Nandana, Radhanath, Hari, Yashamati, Pranadhana, Madana Mohan, Shyama Sundar, Madhava, Gopinath, Braja Gopala Rakhala, Yadava. And these are examples of the Lord's primary names. तो ये सारे भगवान के मुख्य नामों के उदाहरण हैं जो भगवान ने दी. By chanting these names, the spirit soul attains Lord Krishna's abode. इन नामों के जप से आप जीवात्मा जो है भगवान के आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करते हैं. The names that describe the Supreme Lord's relationship with the dull material world are secondary names. तो ऐसे नाम जो भगवान का इस
जड़ जगत से संबंध बताते हैं वह गौण नाम है। This the Vedas say. ऐसा वेद पुष्टि करते हैं। And they are and Shrishtikarta, Paramatma, Brahma, Stitikara, Jagat Samharta, Pata, Yageshwar, and Hara. ये सारे जो नाम हैं भगवान के गौण नाम हैं जो संसार से उनका संबंध बताते हैं। The secondary names are found in the Karma Kanda and Jnana Kanda parts of the Vedas. तो ये भगवान के गौण नाम जो है कर्म कांड और ज्ञान कांड में पाए जाते हैं। These names bring piety and impersonal liberation. This the scriptures say. तो ये भगवान के जो गौण नाम है वो पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं ऐसा शास्त्र कहते हैं। The primary names bring the great treasure of pure love for Lord Krishna. जो भगवान के मुख्य नाम है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान करने वाले हैं। Only by chanting these primary names do the devotees attain that treasure. केवल भगवान के मुख्य नामों के उच्चारण से ही जो भक्त हैं वह दिव्य खजाना प्राप्त करते हैं। So primary names and secondary names. Then we are not concerned about the secondary names, which are describing the connection between the Lord and the material world. भगवान के मुख्य और गौण नाम है, लेकिन हमारा ज़्यादा जो विषय वस्तु है वो मुख्य नाम है, क्योंकि जो गौण नाम है वो भगवान के संसार से संबंध के बारे में बताता है। We are concerned about these primary names, and those are the connection between the Lord and His pastimes in the spiritual world. हम मुख्य नामों से चर्चा करेंगे, क्योंकि वे भगवान और उनकी लीलाएं आध्यात्मिक जगत में उनके बारे में चर्चा करेंगे। If the holy name once comes out of the mouth or once enters the pathway of the ears, whether its syllables are spoken purely or not, जब भगवान का नाम मुख से निकलता है या कानों में प्रवेश करता है, भले ही वो शुद्ध रूप से नहीं किया गया हो, the soul speaking or hearing them becomes delivered. तो वह जीवात्मा जो बोल रहे थे या सुन रही है वो मुक्त हो जाती है। That's the scripture's conclusion. और ये शास्त्रों का निर्णय है। So the potency of the name is to give liberation immediately. तो भगवान के नाम की शक्ति है कि वो तुरंत मुक्ति प्रदान करता है। And we will hear a little bit later about the potency of Namabhas. That's what it is. कुछ समय बाद देखेंगे कि नामाभास के अंदर क्या शक्ति है, और यही शक्ति के बारे में आपको भी बताना है। But the devotees, they are aspiring for more than that. लेकिन जो भक्त हैं उससे भी ज़्यादा उनकी अभिलाषा है। They are aspiring not for liberation, they are aspiring for devotional service. उनकी अभिलाषा मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, उनकी अभिलाषा भक्ति में सेवा प्राप्त करना है। However, one thing should be said about this. Chanting with Namabhas will bring its benefits slowly. लेकिन ये स्पष्ट रूप से ध्यान देना चाहिए कि नामाभास के स्तर पर जप करने से नाम का जो लाभ है वो धीरे धीरे प्राप्त होगा। Namabhas is certainly auspicious, but with Namabhas chanting, the great treasure of pure love takes birth only after a delay. It's slow. नामाभास निश्चित रूप से शुभ है, लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे प्रगति करता है। शुद्ध नाम की तुलना में By Namabhas chanting, sins are gradually destroyed and the pure holy name gradually appears. नामाभास से पाप क्षय हो जाते हैं और शुद्ध नाम धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। Then the chanter attains pure love for Lord Krishna. और उसके बाद भगवान का प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करता है। Separation is an offense. The offense blocks the attainment of pure love.
वियोग जो है एक प्रकार का अपराध है। To think that Lord Krishna is different from his holy name is an offense of separation. यह समझना कि भगवान और उनका नाम भिन्न है, वियोग है उन दोनों में, यह एक प्रकार का अपराध है। As long as this idea of separation is present, there can be no pure love. जब तक व्यक्ति इस प्रकार की मनोधारणा में रहता है कि भगवान का नाम और भगवान भिन्न है, तब तक प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। So like we were saying before, we may not realize it yet. But at least we should have trust in the acharyas or Guru Sadhu Shastra saying that there is no difference. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमें इसकी अनुभूति हो सकता है नहीं, लेकिन हमें गुरु साधु शास्त्र के ऊपर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, जैसा वो कह रहे हैं वो सत्य है। So we have no doubt that this is a fact, but we don't know it. तो हमें इस पर कोई संशय नहीं है कि ये सत्य है कि नहीं, लेकिन बस इतना है कि हम इसको अभी अनुभव नहीं करते। But because we are convinced, based on Guru Sadhu Shastra, we will come to realize it very soon. क्योंकि हमारे गुरु साधु शास्त्र के अनुसार पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, इसलिए शीघ्र ही हम इसे अनुभव भी करने लगेंगे। But when we start having doubts, like, okay, I didn't realize it, so therefore it cannot be like this. लेकिन यदि हमारे मन में इस प्रकार के संशय है कि मुझे तो इसकी कोई अनुभूति नहीं है, इसलिए मैं इस पर विश्वास नहीं करूँगा। Or maybe some people can realize it and some will not realize it. These are all doubts. तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार सोचता है कि किसी को हो सकता है अनुभूति हो, किसी को नहीं होगी, ये सारे संशय हैं। Thinking like that, it will slow down our progress. इस प्रकार से विचार करना हमारी प्रगति को धीमे कर देगा। That's a fact. तो ये सत्य है। The Vedas describe two kinds of separation. Separation of syllables and separation of identities. वेद जो है दो प्रकार की वेद बुद्धि के बारे में बताते हैं, उच्चारण के बारे में और अर्थ के बारे में। The Mayavadis fools think that Krishna is different from his holy name. This rubbish idea is not sanctioned by the scriptures. मूर्ख मायावादी ये सोचते हैं कि भगवान और उनका नाम भिन्न है, लेकिन शास्त्र इसकी संस्तुति नहीं करता। Anyone who with his mouth purely chants Lord Krishna's holy name, I accept as a Vaishnava. I happily serve him. जो भी व्यक्ति भगवान का और उनके नाम को भिन्न नहीं समझता है, मैं उसे वैष्णव समझता हूँ और उनका आदर करता हूँ। When he leaves anarthas behind, the chanter attains the pure chanting of the holy name. Then the soul carefully serves his spiritual master. जब जीवात्मा के अनर्थ खत्म हो जाते हैं, तब वो भगवान और उनके नाम में भेद नहीं करता है और वह पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा में लग जाता है। When the devotee's devotional service is free of all unwanted things, the spiritual holy name dances on the devotee's tongue. जब भगवान का भक्त जो है उनकी सेवा में पूर्ण रूप से अपना मुक्त होकर करता है, तो भगवान का नाम उस भक्त की सेवा पर नृत्य करता है। So that's what the Shastra describes. When the devotee purely chants the holy name, then Krishna is present. He is dancing on his tongue. That's तो the ये description. शास्त्र बता रहे हैं कि जब कोई भक्त शुद्ध रूप से भगवान का नाम ले रहा है, तो भगवान वहाँ पर उपस्थित हैं और भगवान उनकी सेवा पर नृत्य कर रहे हैं। And because he is free of anarthas, then he will not want to do anything else than chant. और क्योंकि उस समय वो भक्त अनर्थों से मुक्त है, उस समय वो भगवान के नाम जप के अलावा और कुछ नहीं करना चाहते। Okay. Then the devotee will never abandon the holy name, for it becomes to him like a flood of nectar. उस समय भक्त जो है भगवान के नाम को कभी परित्याग नहीं करते, क्योंकि उस समय वह आनंद का सैलाब जैसा हो जाता है भगवान के नाम के लिए। Intoxicated by drinking the nectar of the holy name, the soul dances without stop. भगवान के नामामृत में उन्मत्त होकर जीवात्मा नृत्य करने लगती है। Then the holy name dances, the soul dances.
और फिर भगवान का नाम नृत्य करता है और जीवात्मा में नृत्य करती है, And then Maya runs away. और माया दूर भग जाती है। The Supreme Lord has given to every human being the right to chant the holy name. तो भगवान ने हर मनुष्य को यह अधिकार दिया है भगवान का नाम जप करने का। The Lord has also placed all his powers in his holy name. भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ भी अपने नाम में डाल दी। He who has faith in the holy name is qualified to chant it. जिसको भगवान के नाम पर श्रद्धा है वह भगवान का नाम जप करने के लिए योग्य है। He is saintly and pious, on whose mouth the holy name appears. वह साधु है और पुण्यशाली है जिनकी सेवा पर भगवान नाम आता है। Considerations of the proper time and place, of impurity, of rules and regulations, नाम पालने का जो विचार है or of anything else have no bearing on chanting the holy name. नाम पालने का नाम के जप में काल और स्थिति इन सब नियमों का कोई विचार नहीं है। For the holy name is very powerful. क्योंकि भगवान का नाम जो है वह बहुत शक्तिशाली है। In giving charity, performing yagyas, performing ritual bath, and chanting japa of other mantras, many rules and regulations must be followed. तो दान, यज्ञ और अन्य मंत्रों के उच्चारण में बहुत सारे विधि विधानों का पालन करना होता है। However, in chanting Lord Krishna's holy name, faith alone makes one qualified to chant. लेकिन भगवान के नाम जप के लिए केवल श्रद्धा ही पर्याप्त है व्यक्ति को योग्यता प्रदान करने के लिए। So chanting of the holy name, there are no rules and regulations. तो भगवान के नाम में कोई नियमों का बाधा नहीं है। The only qualification is that one chants with faith. केवल एक ही योग्यता है कि विश्वास के साथ जप करना, That brings the highest results. और यही जो है सर्वोच्च फल प्रदान करेगा। Anyone who with undeviating faith takes shelter of chanting Lord Krishna's holy name, chanting, that is the religion of this age, attains everything. जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का जप करता है, जो इस युग का धर्म है, वह जीवन की पूर्णता प्राप्त करेगा। The souls in Kali Yuga should make Lord Krishna their whole world and always sincerely chant Lord Krishna's holy name. तो कलयुग के जीवात्मा को भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। One should accept everything favorable for devotional service and reject everything unfavorable for devotional service. भक्ति के लिए जो कुछ अनुकूल है उसे स्वीकार करना चाहिए और जो कुछ प्रतिकूल है उसको वर्जित करना चाहिए। Making Krishna one's whole world, one should pass this life always remembering Lord Krishna's holy name. भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का सब कुछ मानकर भगवान कृष्ण का नाम और उसका स्मरण करते हुए जीवन बिताना। One should not follow other religions or other rituals. One should not worship anyone but Lord Krishna as the Supreme Lord. तो और कोई विधि विधानों या धार्मिक अनुष्ठानों करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान श्री कृष्ण पर ही केंद्रित होना चाहिए। One should always chant Lord Krishna's name and always serve his devotees. हमेशा भगवान के नाम का जप करना चाहिए और उनके भक्तों की सेवा करनी चाहिए। In this way, one will certainly attain Krishna Prema. इस प्रकार निश्चित रूप से व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा। Weeping, Lord Haridas fell before Lord Chaitanya's feet, grasped them and begged for the gift of love for the holy name. हरिदास ठाकुर इस प्रकार कहते कहते क्रंदन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़कर ये याचना करते हैं कि कृपया अपने उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करें। The Cintamani jewel of Lord Krishna's holy name has become the life of Bhaktivinoda, who always stays at Haridas Thakur's feet. चिंतामणि के रत्न भगवान का नाम है वो भक्तिविनोद ठाकुर याचना कर रहे हैं कि हरिदास ठाकुर के चरणों पर Okay, so that was
some sort of just the beginning of the book. तो यह बुक के एक प्रकार का आरंभ था पुस्तक का, About the chanting of the holy name in nutshell. भगवान के जप के बारे में विस्तार रूप में बताया गया है। And then tomorrow we can describe, or we can hear the description of the Nama Bhavs. कल हम जो है नाम भास के बारे में चर्चा करेंगे। Okay, any questions? Anything? किसी का कोई प्रश्न है? So here we have to be very careful and very much aware of what is the Yuga Dharma. हमको सावधान रहना है कि योग धर्म क्या है। Chanting of the holy name. So why do we do it? And all these are described, and even though we may not have realized it yet, but we should still follow. तो हम क्यों भगवान के नाम का कीर्तन जप करते हैं, तो ये सब उसके बारे में व्याख्यान हुआ, तो हमें इसकी अनुभूति हो सकता है नहीं हो, लेकिन फिर भी हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। Therefore, we should always very carefully try to chant the holy name, chant japa, इसलिए हमें हमेशा सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए, especially those who are initiated. No? खास करके जिनकी दीक्षा हो गई, Then they should be very carefully chanting. उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए। Minimum 16 rounds, but there is no limit. कम से कम 16 माला, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं। Ideally in the morning, now before the sun comes up, so then we can fully focus, fully concentrate on chanting. आदर्श रूप से सुबह सुबह ही जप कर लेना चाहिए, क्योंकि हम उस समय पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। Chanting should not be done with inattention. जब जो है असावधानी पूर्वक नहीं करना चाहिए, That's also an offense. वो भी एक प्रकार का अपराध है। So should not be chanting now like while driving a car, or while reading, or no. तो कार चलाते समय या पढ़ते समय जप नहीं करना है। Then the japa should be given its priority. जप को प्राथमिकता हमें देनी है। If we put a sincere effort in our japa, we will get the realizations. यदि हम गंभीर प्रयास करेंगे तो हमें अनुभूतियाँ प्राप्त होंगी। If we don't put the effort into it, then it will take time. यदि हमारा प्रयास गंभीर नहीं होगा तो बहुत समय लगेगा। Can be years, can be lifetimes. ये कई वर्ष हो सकते हैं, कई जीवन भी हो सकते हैं। Depends on our sincerity. हमारी गंभीरता पर निर्भर करता है। So we should not be insincere. तो हमें गंभीर होना चाहिए। That's what then Haridas Thakur is teaching us. तो ये हरिदास ठाकुर की शिक्षा दे रहे हैं। Hare Krishna. Yes? Because we don't have any realization, so over the time, our sincerity, because it might be with our offenses, we are not getting realization. But if we don't get any realization, so the level of sincerity that we started chanting, it might reduce over time because it becomes a mechanical activity. So how should we go about this? We maintain, so we might not have realized. Yeah. Can you translate it? तो हो सकता है कि हमें अनुभूति प्राप्त नहीं है भगवान के नाम के बारे में, जो यहाँ पे महिमा वर्णन हुआ, तो क्योंकि अनुभूति नहीं है तो समय बीतने के साथ हो सकता है कि हमारी जो गंभीरता है वह कम होती जाए, क्योंकि तो हमें किस प्रकार से गंभीरता बनाए रख सकते हैं। See, there are a few elements working here.
तो यहाँ के कुछ तत्व और कार्य कर रहे हैं। Realization now is not just of one level. अनुभूति जो है वो केवल एक स्तर पर नहीं होती। Realization, actually just the word, the Vigyan, is applied, practically applied Gyan, knowledge. अनुभूति मतलब विज्ञान है जो ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग से होता है। When you apply the knowledge, you will come to realize something. जब हम ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग करते हैं तब वह विज्ञान के स्तर पर आता है। We can give some examples, say from cooking. जिस प्रकार पाकशाला में कुकिंग करना। You may have learned that you take a water, put some maida inside or some atta and you can make roti. तो आपने कहीं हो सकता है देखा है पढ़ा हो कि कुछ पानी लीजिए और कुछ आटा लीजिए और इस प्रकार आप रोटी बना सकते हैं। That's a gyan. ये एक प्रकार का ज्ञान है। So if you tell somebody, no, yeah, take water, take atta, put some little salt and you can make rotis. तो आप किसी को बता सकते हैं कि पानी लीजिए, आटा लीजिए, नमक लीजिए और आप रोटी बना सकते हैं। Now will the person be able to make rotis? तो क्या व्यक्ति इतना सुंदर से रोटी बना पाए? No. He doesn't know how much water. नहीं बना पाएगा क्योंकि नहीं जानता है कितना पानी चाहिए। So you tell him exactly then how much he needs to do. तो हम उसे बताएंगे कि कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ेगी। And then you have to tell him how to knead it, और कैसे उसको गूंथना है। then to keep it for some time, और कुछ समय के लिए उसको रखना है। and then you have to roll it out. और उसके बाद उसको बेलना है। But roll it out, then again, what is he going to, how does he know? Just by hearing or by seeing the recipe, he will not be able to do it exactly. और बेलना जैसे केवल सुन के या रेसिपी पढ़ के वो नहीं समझ पाएगा कैसे करना। So what he needs to do? He needs to try it. He needs to do it, practically apply it. तो उसको जो है व्यवहारिक रूप से बेल के देखना होगा, उस ज्ञान को लगाना होगा, उपयोग करना होगा। He tries, and if it works, great. If it doesn't work, he learns from the mistake and tries again, and he will get it. तो उस ज्ञान का प्रयोग करेगा और बेलने का प्रयास करेगा। हो सकता है उसे सफलता प्राप्त हो, और अगर सफलता प्राप्त नहीं होगी तो उसमें सुधार करके वो फिर से प्रयास करेगा। So, by practicing doing the rotis every day, you become perfect. तो इस प्रकार रोज रोटी बनाने के अभ्यास करते करते एक दिन वो सही रोटी बनाना सीख जाएगा। So, there's a secret. That's the realization, applied knowledge. तो यह है विज्ञान, ज्ञान का व्यवहारिक दृष्टि से उपयोग करना। So, yes, we don't have the realization of the holy name. तो हाँ, हमें जो है भगवान के नाम के बारे में अनुभूति प्राप्त नहीं है। But we follow what the acharyas teach us. लेकिन जो आचार्य कह रहे हैं हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। You chant and get rid of your doubts. हम जप करते हैं और इस प्रकार से जो संशय है वो खत्म हो जाए। With a little faith, you will get your realizations. तो थोड़ी श्रद्धा से प्रारंभ करने से धीरे धीरे अनुभूति प्राप्त करेंगे। Those realizations may not be full yet, but with those little realizations, you will get more faith. तो जो श्रद्धा के साथ प्रारंभ करने से जो अनुभूति प्राप्त होगी वो पूर्ण नहीं होगी, लेकिन उस आंशिक अनुभूतियों से हम और आगे बढ़ेंगे। And you will get more determination to continue chanting. और उससे जो हमारी दृढ़ता बढ़ जाएगी कि हमें जप करते रहना है। Then some taste will come. और कुछ रुचि होने लगेगी। That taste will give you more enthusiasm वो आस्वादन जो हमें और उत्साहित करेगा to continue. जप करने के लिए और प्रेरणा देगा। And with that, you will come to deeper realization. और उससे हम धीरे धीरे और गहनतम अनुभूतियाँ प्राप्त करते जाएंगे।
that gives you more enthusiasm, more determination to continue. वह आपको और उत्साह और दृढ़ता प्रदान करेगा भगवान का नाम जप करते रहने के लिए. So if you follow the process properly, you should be getting more and more taste for chanting. यदि हम विधि का सही तरीके से पालन करेंगे तो भगवान के नाम में और अधिक स्वाद मिलते जाने चाहिए. Even though in the beginning it's just mechanical. शुरू में हो सकता है ये सब यांत्रिक रूप से किया जाए. But if you follow Guru Sadhu Shastra, the taste will be increasing and your realizations will be getting greater. लेकिन यदि हम गुरु साधु शास्त्र के अनुसार उस विधि का पालन करते रहेंगे तो अनुभूति और आस्वादन बढ़ता जाएगा. If it is not happening, that is not a fault of the holy name, but you are doing something wrong. यदि इस प्रकार से नहीं हो रहा है तो इसमें भगवान नाम का कोई दोष नहीं है और हम विधि किस प्रकार से पालन कर रहे हैं उसमें कुछ त्रुटि है. So, and at that time, then it's necessary probably to consult Guru Sadhu Shastra and to see what is wrong. यदि ऐसी परिस्थिति आ रही है तो गुरु साधु शास्त्र से हमें परामर्श करना चाहिए कि क्या गलतियां हो रही हैं. Most of the time, it's because we are committing namaparad. ज़्यादातर समय में यह नाम अपराध के कारण होता है. And many times, it's because we are inattentive or we are committing vaishnavaparad. कई बार जो है हम सावधान नहीं रहते हैं और हम वैष्णव अपराध करते हैं. Then the taste for the holy name, it's not manifesting. और इस कारण से भगवान के नाम में रुचि नहीं आती. So in those cases, we have to first see how to avoid namaparad. उस परिस्थिति में हमें पहले यह देखना होगा कि हम नाम अपराध से कैसे बच सकते हैं. Then the taste will come. उस प्रकार हमें आस्वादन रुचि प्राप्त होगी. Okay. Hare Krishna. Jai Shri Haridas Thakur ki, Jai Shri Bhaktivinoda Thakur ki, Jai Shri Prabhupada ki, Jai Nitai Gaur Pramanande. His Holiness Bhakti Anagar Prabhupada Swami Maharaj ki